Hello, everybody. Today, I have a very special guest with me, Dr. Pramod Kumar Rajput. He's a seasoned corporate professional with a rich experience of over 40 years in pharmaceutical and healthcare industry, sales and marketing, while working as senior vice president in domestic market and now heading as in charge of 21 countries of Cadila Pharmaceuticals Limited, based at Ahmedabad. He is known as the Rajput of Cadila within the healthcare fraternity. Being an engineer college dropout, he started his professional journey as a medical rep and has risen to this position. Won multiple awards, he's built businesses, he's built teams. So ये सारी चीजें मैं उनसे पूछना चाहूंगी. Sir, welcome to Stories Matter. आपका हार्दिक अभिनंदन. Thank you. Good morning, Indu ma'am. Great blessings for me that I have been invited by you in the Stories Matter, because I always appreciate and I always learn the various way the way you make the things happen. And today I am blessed that I am here in front of you. Sir, it's totally my honor that you've accepted my invitation. Sir, सबसे पहले आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए जो हमारे बच्चों को जो अभी पढ़ रहे हैं या यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी जिससे. सो कहाँ से आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट से कैसे आप मेडिकल रेप एंड नाउ यू आर हेडिंग द सीनियर मोस्ट पोजीशन इन द सेम कंपनी. जब मैंने जर्नी अपनी शुरू की थी तो आई डिड माय एजुकेशन फ्रॉम गोरखपुर, बीएससी किया था. देन आफ्टर दैट आई वाज सिलेक्टेड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज. 45 डेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में था लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, तो आई डिडंट लाइक दैट. सो आई सेड नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. देन आई जॉइंड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. माई पेरेंट्स, बिकॉज बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स, दे आर नॉट वेरी हैप्पी. हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उनका बेटा एक इंजीनियर या डॉक्टर बने. आई एम टॉकिंग अबाउट 1982. फिर मैंने कहा कि नहीं, सपना नहीं तोड़ूंगा, कुछ करके दिखाना है. एंड देन आई जॉइंड दिस प्रोफेशन एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. And then after that, I was very clear that I have to grow, and I started growing on that. And every 3 years of time, I got one of the promotion because I was very, very clear. तो क्या होता है कि अगर आप किसी छोटी जगह से आते हो ना, तो आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, राइट? और फिर अगर आप उन सपनों को अगर साकार करने पे लग जाते हो, तो भगवान भी आपका साथ देता है. और everybody's good wishes and the blessings are always there. और उसी इंटेंशन से फिर मैं आगे, मेरे सीनियर से मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे गाइड किया. फिर मैं जब मैनेजर बना तो मेरी टीम ने मुझे जो है साथ दिया, बिकॉज मेरा ये सिंपल था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाना है. लीडर्स वो नहीं जो आगे चले, लीडर्स वो हैं जो कि अपने से बेटर लोगों को क्रिएट करें, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गॉन आर द डेज दैट यू स्टार्ट making the people to follow you. No, please ensure the people should be leading and you should be there as a guide, as a mentor to make the things happen. And that was the thing which has come in my mind. And then after that MBA किया, फिर IIM से specialized course किया. Then I did 25 various certification courses from the different part of the world. And then in between, then I got multiple opportunities to learn. I did the diploma in project management, leadership development from Berlin से किया मैंने. एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप प्रोग्राम मैंने बॉस्टन से किया मैंने. तो ऐसे करके कुछ ना कुछ मैं करता रहा और ऐड करता रहा कि देखो, लर्निंग इज वन प्रोसेस व्हिच नेवर एंड्स. आई ऑलवेज से कि टिल द टाइम द ब्रेथ इज देयर यू कीप ऑन लर्निंग. देन आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. माय सीनियर ही सेड इफ यू वांट टू लीड इंडिया यू हैव टू गो टू साउथ. उस टाइम तो हम साउथ को तो ये समझते थे मद्रासी लोग हैं, बिकॉज उतने हम मतलब समझते नहीं थे, बिकॉज उतना हमारा नॉलेज sensitive about the thing. So I said, okay, not an issue. I said, I never said no. So then he said that, are you crazy? Okay, yes, I am a crazy person, because for me, I will never say no for the things and I will just keep on making the thing. क्योंकि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब मेरे पास कुछ था नहीं और वह गेन ही करना था मुझे, तो मुझे कोई लूज करने के लिए बचा ही नहीं था. So every step was a gaining step for me. And then I came to Bangalore, where I was not aware about the language, neither the food habit, neither the how the people, what the culture it is. I said, no problem. Flexibility and adaptability is one of the biggest thing one person should have. And that I did it, and I learned again from the Bangalore people, from the entire South people. Then after that, I have been given the opportunity to come to Bombay to lead the entire India for the sales. And then after that, I came to Ahmedabad on this position. And believe you me, this is only single one company. The name Cadila is. People feel that कि चलो दो तरह से grow करते हैं, एक तो company change करके grow करते हैं. मैंने सोचा everywhere the things are same. So if you start contributing it,
you will start growing it. So always say ना कि अगर आप किसी को देते हो तो abundance में जो है वो आपको वापस आता है. Whatever my journey is, it is my gratitude to any person and every person, because ये journey मेरी कभी भी fulfill नहीं होती अगर मेरा साथ नहीं देते. उनसे मैंने बहुत सीखा है, अच्छे लोगों से भी सीखा है, और जो लोग लेग पुल करते थे उनसे भी सीखा है कि आप कैसे जो है आप नेगेटिव से पॉजिटिव को चेंज करो, हाउ टू लर्न फ्रॉम देम, हाउ टू मेक द थिंग्स हैपन सो दैट दे शुड आल्सो चेंज देमसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड अनदर थिंग आई हैव लर्न कि अगर आप किसी को चेंज नहीं कर सकते तो आप अपने को चेंज करो, so that a person should be start admiring you and start respecting you, because respect is never been desired, it is always been commanded with your good deeds. That is very very important. सर ट्रूली इंस्पायरिंग. आपने ऑलरेडी सारी क्वालिटीज जो हम पढ़ते हैं कि एक ग्रेट लीडर में होनी चाहिए, आई थिंक वो आपने सारा ऑलरेडी जिस्ट दे दिया कि नेवर सेइंग नो एंड ऑलवेज रेडी टू टेक अ प्लंज और टेक अ बीइंग अ प्रोएक्टिव पर्सन, और अडेप्टेबिलिटी, टीम बिल्डिंग और टीम को अपने से आगे रखना, ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं. एक ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि इन सारी क्वालिटीज में से सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसने आपको वहां से यहाँ तक पहुंचाया? आई ऑलवेज से, जैसे ताश के पत्ते में 4 इक्के होते हैं ना, वैसे आपके पास वो ए होता है. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ए है वो एटीट्यूड है. एटीट्यूड डिसाइड्स द एल्टीट्यूड, एंड इफ यू हैव अ राइट एप्टीट्यूड विद असर्टिवनेस, all A's. All A's. And the first is attitude. I have never done the dissection of the frog, but I now take care for the pharmaceutical company from the pin to elephant. But I have not touched the frog. I have not done the dissection of that thing, which normally people in the biology classes, they do in the 10th standard or 12th standard. So my attitude was very clear: learning attitude, growing attitude, building attitude, helping attitude, adaptability, attitude of gratitude. So all these things are there, which has given me and the strength so to move ahead and ahead and ahead. Okay, sir, it's truly inspiring, and I would say every step has been a learning stage. It was a continuous cycle of learning in your life. Sir, next question, which is like आजकल मैंने देखा टाइम के ऊपर लोगों का attention span बहुत कम है. They are spending too much time on social media. और कुछ जो लोग मैं डिफरेंस देखती हूँ बिटवीन अ फेलियर एंड अ सक्सेसफुल पर्सन, वही एक पूरा डिफरेंस है कि उसने वो 24 घंटे में एक इंसान ने उसको कहाँ से कहाँ बना दिया और एक ने कुछ नहीं किया और बैठे बैठे सिर्फ किस्मत को कोसा. जो कहते हैं मैं भी उतनी एफर्ट करता हूँ पर मेरे साथ वाले हैं जो उनको ये डील्स और उनको सब मिल जाता है पर हमें नहीं मिलता. पर मुझे हमेशा लगता है कि हमारी एफर्ट में या हमारे वो काम करने में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होता है. This is the reason why some people succeed and some do not. So what is that difference do you see? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, because I always feel कि whatever you choose that particular goal, right? Please go outright, outrightly to ensure to achieve the goal, because there are always a milestones are there, and you prepare your milestone that in particular time limit, how you are going to accomplish that particular milestone and what preparation is required. Right, and see that whether I am able to achieve it or not. If you are not able to achieve, what is the different way we are going to achieve it? Just want to give you one example. I was not in social media, let me tell you. So during the Corona time, I said that why I should not be there in the social media, because my colleagues, my junior people, right, they inspired me कि आप LinkedIn पे आओ, आप क्यों नहीं आते हो, आप इसमें कहते चलो ठीक है. But मैंने कहा कुछ उसका मकसद होना चाहिए आने का. वैसे तो लोग बहुत जुड़ते हैं. So then I thought कि if I will be in LinkedIn, then what I will be able to give back to the society, which is very important. Then I created one thing that yes, how the education, how the learning, how the experience is going to help other people, and that I started from July, and last year July I started. Believe you me, I was also surprised, and the people who are associated with me, they also surprised. 9 महीने में ही मेरे 30,000 पूरे हो गए थे. And I have given many things, lectures on the different part, on the communication, on the leadership, how to tackle, what are things are there. So these are the things are there. Once you start deciding on that, you will be able to accomplish. I feel that the word is I am possible is always there. Impossible to koi word hai hi nahi. I am possible is there if you have right intention, if you have a proper plan, and if you are affixed to the entire things, you are going to achieve it. And this I have personally feel. थोड़ा देर लग जाती है, कभी कभी देर लगती है, हो सकता है कि वो रास्ता ठीक ना हो, आप रास्ता चेंज कर दो, बट आपका गोल क्लियर है, मिशन क्लियर है, and then your things are very clear, you are going to achieve that part.
तो ये मैं आपका जो क्वेश्चन था कि आज के जो नए लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है. इट्स ऑलवेज सेड ना कि इफ यू वांट टू कट ए ट्री इन 10 hours, so 9 hours you sharpen your axe and cut the tree in 1 hour of time. So that is very, very important, how you are sharpening yourself, right, so that you'll be able to achieve that thing, which is highly important and recommended as well. Honing your skill continuously. Sir, absolutely, you have hit the nail कि अगर आप अपने ऊपर ज्यादा काम करोगे, अपने को संवारते रहोगे जैसे कहते हैं, तो काम बढ़िया हो ही जाएगा. सर, एक चीज जो आपने देखी है जब नेवर वी डन और हैड कॉन्वर्सेशंस कि आप कहीं भी बैठे हो किसी भी कंट्री में और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, सो यू आर सो प्रॉम्प्ट ऑन रिप्लाइंग, यू डोंट वेट कि नहीं मैडम मैं अभी कॉल कर लेता हूँ, और काम उसी समय खत्म कर लेना. वो चीज भी मुझे लगता है बहुत मैटर करती है कि आप डिले ही नहीं करते चीज को. मैंने देखा लोगों के साथ आप चैट करो, यस आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, और वो फिर आप भी भूल जाते हैं और इंसान दूसरा भी भूल जाता है. वेयर एज अगर आपने उस चीज को उसी समय सॉल्व कर लिया तो हमारी जैसे विद इन अ मिनट मीटिंग फिक्स हो गई. आई थिंक दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ मैटर अ लॉट, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम फिक्स हो गया. एंड सेकेंड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, लाइक you may be driving or you may be sitting at the airport, you are still working, you are still coordinating that event. I remember that Vicky thing, that international women's this thing. So I was so surprised that person is sitting at the airport and is still conducting the entire or moderating the entire show. So which is a normal person would say, no, I am traveling. That again comes back to your attitude, which is what we just keep looking at people we admire, but we don't imbibe those values. Here, I also want to say that learning from your seniors and imbibing those values and then practicing them is equally important. वो चाहे हमारे माँ बाप से हों, like my father is at 85 still, a very hard working person. रोज एक आर्टिकल लिखते हैं, brother. तो उन सबको देख के अगर हमने अपने आप को सीखा ही नहीं तो फिर क्या फायदा, फिर देखो और फिर अपनी करते रहो बैठे. आई थिंक ये लीडर्स से हमें ये सब सीखना बहुत आवश्यक है. तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपने कहा फ्रॉम टीम बिल्डिंग टू बिल्डिंग ब्रांड्स एंड यू रियली हेल्प बिजनेसेस ग्रो. सो व्हाट tips you would want to give those youngsters in sales and marketing from your experience where they can gain? See, the thing is, after this COVID, right, post-COVID, the entire world has changed. Digitalization has become a real requirement, right? And that is the way. You are in Delhi, I'm in Ahmedabad, we are talking, this interview is there, people are going to listen a lot and all. So a person has to unlearn, relearn and learn. So the youngsters, they have plethora of the things available in front of them. They should not be missing it. और जो आपने पहली बात की थी, procrastination, right? So there should not be a procrastination. आज का काम मैं कल करूँ, कल का काम परसों करूँ, वो होता नहीं है. So whatever it is available, please ensure it, finish it up, then only you go for the second step. Otherwise, you will not be able to complete, and the half thing will not going to give you anything. So no rewards, no pains, no gains. Yeah, correct. And the second thing is, Indu ma'am, is suppose you have decided that you want to do this part, you always prepare a roadmap. Please spend your time, quality time, concentrated time, that what are the steps are required in that, whether my roadmap is robust or not. Second thing is, always take the guidelines from a person who is on the senior level or the person who has experience and who has achieved something like that. राइट, अगर आप उनसे गाइडलाइन लेंगे तो आपको वो पूरा वो रोड मैप बता देंगे कि हाँ, बिकॉज द पर्सन हु इज एक्सपीरियंस, ही हैज ट्रैवल्ड अ टफ रोड. द पर्सन विल बी एबल टू टेल यू विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू ट्रेवल, बट व्हाट आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड. सो इन दैट वे the new professionals will be able to get the thing which is very important. इंदु मैम को अगर कंपनी बिल्ड करनी है तो इंदु मैम किससे बात करेंगे? एजुकेटर से नहीं बात करेंगे. इंदु मैम इज गोइंग टू स्पीक टू सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, that from that scratch how you build it, what were the hurdles which you have seen and how you come out from the hurdles. So मुझे कहाँ उस पे precaution लेना पड़ेगा. So this is very important. So this is the clear-cut guidelines to the youngster, that please talk to the person who is there in that particular driving seat. He will be able to, she will be able to guide you the right perspective of the thing to build your career, because time is very short.
अदरवाइज वो बोलेंगे कि टाइम नहीं है। टाइम तो होता है, टाइम का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, किसके साथ करते हो, किस हिसाब से करते हो, क्यों करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Absolutely, sir. Why commit the same mistakes which other person has already committed? We can always learn from their experience and then take it forward. Also, करेक्ट मैम। जो उन्होंने problems face की थी, वो आपको already you can preempt them and avoid those. So that's extremely important to learn from the right people and from the similar line. सेकेंड इज नेवर एवर रिएक्ट ऑन द थिंग्स, बिकॉज ये तो 100% है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी, because we are not running on the smooth road, right? And why the speed breakers are there in the road? Because when we are driving very fast, speed breakers gives a pause to us, wait, and again you increase the speed. So never react, always respond on the things, think over it, because reaction में आप aggression में react करते हो, respond करते हो तो आप assertiveness में respond करते हो, which makes a lot of difference on that. Think over it and then, and because क्या कि हम लोग क्या fluke पे immediately we respond, we don't take the time to think over it. Once you thought properly, I think the things will be much better, and that The is there with the decision youth will people. be, you will be operating from the logic and not from the impulsive this thing. Yes, 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 ma'am. Yes, sir. It is basically where you are teaching emotional intelligence here, which is like we keep conducting those sessions, we people keep listening, but again everything boils back to imbibing. हम उसको implement कितना कर पाते हैं. Sir, coming to next question, I have seen you. You are a very family person. So how do you balance? You are so much traveling because in sales, marketing, people are traveling all the time. Like your kids were also small. Now that they are grown up, थोड़ा अपनी family life के बारे में बताइए. How do you balance it? और ये भी बताइए लोगों को ये भी नहीं करना आता. अगर वो काम पे ज्यादा फोकस कर देते हैं तो वो फैमिली इग्नोर कर देते हैं. जहाँ फैमिली को देखते हैं वहाँ काम इग्नोर. So this balancing act is also extremely important. तो उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइंस? 3 things I will tell. First of all, I learned the basics from my mother. Complete respect to my mother because she taught me about the basic thing. वो culture जो कहते हैं ना, value system, वो घर से आता है, right? So that is the thing, because जो आप भी बोलते हो इंदु मैम कि हमने भी घर में मम्मी पापा से ही सब चीज सीखी. So that culture comes from there. That is the one. Second thing is the biggest pillar is my wife. Because if she would not have been with me in this my entire journey, I would have not achieved and attained this position, right? So that is the reason I always give this tribute to her. This is the second, and of course God is always there to help me and to support me and my family. So these are the 3 factors are there. Coming to the work-life balance, I never ever take any office work back to home. Work means the tension of the office or the requirement of the office, because I finish it here, right? And then I am a completely a husband or as a father or as a son for my parents, because if I'll carry the same thing unnecessarily, they'll be getting disturbed. ऐसा नहीं कि if you are sitting on this position, you have multiple tensions are there. This is my responsibility, this is my job, right? This is my thing. So why I should pass this thing to the people who are not there, who are always there to support? Please leave your work in your workplace only. Home place is a home place. होम प्लेस में दिल से काम होता है, वर्क प्लेस में दिमाग से काम होता है. अगर आप होम प्लेस पे दिमाग लगाओगे और वर्क प्लेस में दिल लगाओगे तो दोनों काम नहीं होने वाले. ज्यादातर यही हो रहा है. वो कहते हैं बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसीलिए दोनों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल डू नॉट नो हाउ टू बैलेंस इट. आई एम श्योर दे विल लर्न अ बिग lesson from your life, from your experiences. This is going to, be very helpful for our youngsters. Second thing is always love the thing which you are doing it. Always have the happiness with you. You know that when you will have happiness with you, you will always ensure that the things are moving in a very positive way. Because when you talk good, when you see the happiness, when you inspire the people to inspire, you will find everything will be very happy. आप घर पे भी जगह जाते हो, प्यार से बात करते हो, तो यू विल गेट द रिस्पेक्ट. सपोज करो मैं इंदु मैम को इंदु मैम नमस्ते बोलता हूँ, तो इंदु मैम भी मुझे उस हिसाब से बात करती है. It is very thing, give a respect either the person in the high level or in the lower level. And same thing is you have to have the respect from your home, because अगर आप घर से satisfied हो तो you can do anything and everything with this. So प्यार करो घर वालों को और काम करो बाहर वालों के साथ. बहुत ही बढ़िया मूल मंत्र है
प्यार करो और सबको, इंसान को इज्जत दो, उनको प्यार से बोलो। एंड ऑल्सो आप बहुत एक्टिव हो, बहुत एक्सट्रीमली एक्टिव इंसान, जो कि हर मैसेज का लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से उनको जवाब देते हो, ग्रुप्स में भी आप एक्टिव हो। सो इतना सारा टाइम आप निकालते कैसे हो सारा? सो इट इज अ मल्टी वे ऑफ मैनेजिंग। सपोज करो किसी ने मुझे कुछ मैसेज भेजा, राइट, या कुछ मेरा वो वेल विशर हो तभी उसने मुझे मैसेज भेजा, कोई हर आदमी तो नहीं भेजता है। दिस इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे द थैंक्स टू द पर्सन, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We have our spouse, and every day the spouse says I love you, and we don't give even a sari to a spouse or something to the spouse that वो I love you की मेरा कोई मतलब नहीं होता, समझे मैम, right? It is very very clear. You have to show that. It is very important. आपकी बातों से ये भी लगता है कि लोग एक्चुअली बहुत शैलो उस पे कनेक्शंस बनाते हैं। अगर आप उसके, एज यू सेड, इमोशनल कनेक्ट बनाएंगे तो यू विल केयर फॉर द पर्सन। सो केयर कम्स ओनली वंस यू फील इट, यू नो। शैलो बेसिस पे आप दिखाने के लिए इतनी देर नहीं दिखा सकता कोई भी इंसान। आप कितने दिन तक दिखाने के लिए भी कर सकते हो। और अगर Correct. आजकल तो हम कहते हैं थेरेपी में दिखाने से शुरू करो, सो दिखाते दिखाते शायद आपकी आदत बन जाए। और अगर वो आपकी आदत बन गई तो आप नेचुरली फिर सक्सेसफुल। अगर मैं अच्छी नहीं हूँ, कम से कम 1 हफ्ता प्रैक्टिस करूँ कि मैं सबको अच्छा ही बोलूंगी या मैं अच्छे से ही बिहेव हाँ, करूंगी, तो 1 महीना फिर करो, फिर 1 साल करो, तो धीरे-धीरे वो आपकी आदत के अंदर आ जाएगा। So this is how we can build our good habits, we can build our good character, and I think character decides your destiny, and that's what you prove. ओके सर, अभी तक आपने सारा अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल फ्रंट पे बताया। तो मुझे ये बताइए, व्हाट आर योर हॉबीज? व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू डू अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑल द टाइम एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली? कुछ पर्सनल शौक होते हैं ना हमारे, जो हमें कुछ खुशी देते हैं अपने लिए, वो क्या है आपके? okay. So I still love to listen music, right? Hindi music, right? And it is Kishore Kumar ji ka. Then I love to see Hindi movies and some of the English movies along with my family. These are the two hobbies are there. Earlier I was the badminton champion of my college. I used to play 3 साल पहले तक मैं खेलता था. I was a chess champion, so whenever I get time, I always play chess, right? And I love reading the minds of the people. There's another one when they, yeah. That's my So hobby as well. I yeah, try to so always read, you know, beyond the person what I see. कि क्या actually इसकी personality क्या होगी. हाँ जी. Sir, any interesting incident or accident that you would want to mention? कुछ ऐसा interesting आपकी life का हो? So हाँ, इंसिडेंट तो बहुत अच्छे हुए क्योंकि आगे बढ़ते गए, कुछ करते गए, समझते गए, देखते गए, एक्सीडेंट भी हुए. So I will tell you about 2 accidents. The first accident which had happened in 1987 when I got married. तो ये मेरे यहाँ पे माथे पे ना ये देख रहे, मेरी हल्की सी नोज भी देखिए टेढ़ी है ये. तो I had 32 stitches here. Yeah. And then when I was lying with the pool of blood at the operation table, the doctor was telling, and I was listening, right, I was semi-conscious, right, and he was telling to my mother that if he will vomit, he will be in the complete dangerous position. I said, I was listening, and then I said, okay, my God, the mother is there, God is there, wife was holding my hand and all. So anyhow, I came back with a lot of the positiveness in that way, with the grace of God. This was the first incident. Second incident that happened when I was having some husky throat, right? Because I used to talk a lot, and then doctor has to have the operation. So I went to Bombay, and today whatever I am speaking, earlier I was not able to speak in between, right? So she did the operation. There were the nodules in my throat, and then the doctor cut that nodules, and she advised me for 15 days complete rest. So I used to write with pen and pencil and other things and paper to give. So 15 days, that was the second thing, which was a complete different thing which has happened. And it happens only 1 in 1 lakh or 1 in a millions or 10 millions like that. Third thing which had happened, 3 years back, I was attending my niece's marriage. So I love dancing, actually. I really love dancing because I'm since a music lover. So dancing is one of my passion. I know salsa, I know jazz, and so many other things are there. So yeah. When I had a meniscal tear की मेरा घुटना हल्का सा टेढ़ा हो गया था, tilt हो गया था. So I said okay चलो ठीक है, हल्का सा pain हुआ, and then I went on my tour and all. So there was a fluid retention was there.
So there was a lot of pain. I was not able to walk and all. I went to Kerala. When I came back from Kerala, I went to the Apollo hospital. Doctor said ki it is a fluid retention. It is going to be a lot of problem, and you have to have the bed rest for 20 days of time. I said you take out the fluid and all. I will take rest for 5 days of time. उसके बाद मैं काम करूँगा. तो डॉक्टर ने पूरा समझाया. फिर मैं थोड़ा समझा नहीं क्यों मेरी गलती थी वो. 5 दिन के बाद मैं अपने काम पे निकल गया. डॉक्टर ने 20 दिन के रेस्ट बोला था. Then what had happened? Again, the fluid retention started happening, and then there was a pain. Lot of pain was there. So when I went to the doctor, he said that अब तो ये situation आपकी बाहर हो गई है और आपकी जो दोनों knees के जो दोनों joints हैं वो पास में आ गए because you have not taken rest. What is the alternative? So you have to cut the fibula. तो मैं कहा fibula cut करोगे? काट दो, उसमें क्या है? तो कह कि आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी और पेन बहुत होगा. तो फिर मैं इसके अलावा अल्टरनेटिव क्या है? तो इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है. या तो आप बेड रेस्ट करो या ज्यादा चलो नहीं, या तो फिर वो करो. तो मैंने ये तो काम हो नहीं सकता क्योंकि मैं घर पे तो बैठ नहीं सकता हूँ. काम तो करना है. काम तो सारा चलने वाला ही है, करने वाला ही है काम है. और ये सब तो अपना सेल्स एंड मार्केटिंग का तो जॉब ही है कि यू हैव टू मीट द पीपल, यू हैव टू बी देयर एंड ऑल. मैं कट कर दूं, नो प्रॉब्लम. तो हैप्पीली आई वेंट एंड देन लोगों की 206 बोन होती है, मेरी आज की डेट में 208 बोन है क्योंकि मेरी दोनों फेबुला 1.5 इंच कटी हुई है. राइट. So that is there. और ये भी सही है कि मैं पेन होता है सर. Every step when I take there is a pain on my knee, but I have forgotten that pain because that not many things has to be done. So from last 2.5 years I have forgotten. That's become a part and parcel of my life. So wherever I am, either I have to go to the hill station, either I have to go to the land, I have to go anywhere and everywhere. I don't care for that. I said something more bigger things waiting for me. So pain is a part and parcel. It's immaterial for me. So pain तो होता ही होता है मुझे every step when I take, but that is not a thing for me. You can say it is an accident which is converted to incident, which has added lot of strength in my mind, in my body to take care that yes हो सकता है. Nothing is, again I say nothing is impossible. Everything is impossible. आपकी तो हर चीज से सीखने को मिल रहा है सर. आई थिंक अब मैं बोलूंगी कि आप अपनी एक कहानी, एक किताब लिख डालिए ताकि लोग आने वाली जनरेशन आपसे इंस्पिरेशन लेती रहे. Thank you so much, sir. It was really enlightening. I think every word that you speak is a message to everyone. I am learning from you. And अभी लग रहा है चाहे हम 1 घंटा और करें तो भी कम है, पर आप एक अपना लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए. 2-3 मैसेज में देना चाहूंगा मैम कि पहली चीज सबसे बड़ी बात एटीट्यूड की मैंने बात की. यू ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड. सेकंड थिंग इज व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग यू ऑलवेज हैव द पॉजिटिव वर्ड्स. बिकॉज क्या है कि वो एक वाइब्रेशन होती है. हम लोग बात करते हैं ना कि दैट इज अ वाइब्रेशन व्हिच ऑलवेज अट्रैक्ट्स द पॉजिटिविटी. सो नेवर एवर यूज एनी नेगेटिव वर्ड. इवन घर पे भी नहीं बात करना चाहिए कोई भी नेगेटिव वर्ड. अगर कुछ हुआ तो उसको पॉजिटिव वे में बात करो. थर्ड थिंग इज ट्रीट द पर्सन एज अ प्रायोरिटी, नॉट एज ए ऑप्शन. Too good. This last line was too good. Keep the person as a priority, not as an option. Because आजकल हमारे पास टाइम नहीं है या हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो ज्यादातर ऑप्शंस ही बनते जा रहे हैं. So this is extremely a learning message. I am sure we've gained a lot from you, from your expertise. I wish you all the luck and may you keep inspiring many people in future. Best of luck for all your future endeavors, sir. Thank you so much for joining. Thank you, Indu ma'am. Thank you. ये तो आपने मेरी है ना आपके इस पे शो पे आने के मेरी एक विश थी बहुत पहले की कि मैं इंदु मैम के शो पे आऊंगा, इंदु मैम से बातें करूंगा. बिकॉज यू ऑलवेज इंस्पायर मैनी पीपल. द वे यू कम्युनिकेट सो ब्यूटिफुली, सो पोलाइटली, एंड योर चोजन वर्ड्स आर समथिंग वन मस्ट लर्न इट. एंड आई वुड लाइक टू से कि आपके टॉक शो में आपकी जो भी वीडियोस हैं, जिस हिसाब से आप स्टोरी मैटर्स पे बात करते हो, बहुत कुछ सीखने वाला. आप छोटी छोटी चीजों को ना एक इतना बड़ा बना के बताते हुए कि लोगों को अगर समझ में आए तो इट इज समथिंग ग्रेट टू लर्न फ्रॉम यू. एंड दैट इज द रीजन आई फॉलो यू, आई सब्सक्राइब योर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आपकी 100 एपिसोड हुए जब आपने अपनी मम्मी का वो भेजा था. इट वाज समथिंग ऑसम एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. सो थैंक यू एंड थैंक यू. Truly humbled. And sir को आप फॉलो कर सकते हो LinkedIn पे. As he said, he has already 40,000 plus followers. You can be one of them. So follow him. We'll add link in the description box. Thank you, and I'm truly humbled, sir. Thanks a lot. Thank you, Indu ma'am.